Hello students, I'm here with another video from the chapter of class 7th Science NCERT book, that is chapter number 7th, Weather, Climate and Adaptations of Animals to the Climate. Now, as you all know that before starting the new chapter, I always tell you what topics are present in this chapter where we have to study. Okay, all the topics which we all will study in this chapter. So in this chapter we have to study about the topic of weather, that what kind of weather a particular place is happening, is there any difference between climate and weather, because we have already seen some of the elements in few other chapters which were present at the back. I mean, we have already completed it. And as this is the second revision, I mean this is the revision of your chapters, I have already given some videos. Even those videos will have some pictures also with you, and you all have to complete, you all have to do the work, that you have to see those videos. Okay, what work I'm giving you, you all have to watch those videos so that you all can understand what I am teaching right now. So that becomes easy task for you people as well for us also for finding out the task. Okay, so we'll study about the weather, the first topic of this chapter 7, weather, climate and adaptations of the animals to climate. In this we will study about the weather, its definition, how to calculate, how to write it down in the particular way, minimum maximum temperature क्या होता है, minimum maximum कैसे हम weather report बनाते हैं, कौन कौन से elements हम लेते हैं, climate क्या होता है. After that we'll be studying about climate and adaptations also in the most extreme climate we have to study. So we'll study 3 extreme climates. One is the tropical region, polar region, and also in this polar region दोनों का पढ़ना है हमें. Polar region में south pole as well as the north pole. And the next extreme climate which we have to study is the tropical rainforest, where what kind of climate is happening, what kind of animals they are living, and what kind of adaptations they might be having. Before, in between we will study about the adaptations. उसके पूरे concept के बारे में जानेंगे. नहीं तो हमें समझ नहीं आएगा कि adaptations के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं. Okay? So for this, we'll start with the chapter, with the introduction of this chapter, that is weather, climate and adaptations of the animals to the climate. So children, what do you understand by the letter, by this word weather and climate? Are these two the same things or the different things? Weather and climate. So we'll begin the chapter from here itself. These two words will always describe, will always tell us about a particular condition of a particular place. Okay, this tells us about the particular condition of a particular place. अब वो place चाहे कहीं भी present हो, ठीक है, तो उस place के बारे में अगर हमको discuss करना है कभी भी, तो हम कोई भी place के बारे में discuss कर सकते हैं, और कोई भी place हो सकती है वो जहाँ पे ये weather और climate हमको study करना है. Okay? So what is given in your chapter is, do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? I mean, अगर आप लोग कभी हिल स्टेशन पर घूमने गए हैं तो वहाँ पर जाने से पहले हमें कौन कौन सी तैयारी करनी होती है, क्या चीज़ें सोचना पड़ता है. सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट द वेदर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, दैट पर्टिकुलर हिल स्टेशन, की बहुत ठंडी ना हो, बहुत बारिश नहीं होनी चाहिए, तो हम टूरिस्ट प्लेस पर जा कर के भी वहाँ पर कोई टूरिज्म नहीं देख पाएंगे, कोई टूरिज्म नहीं कर पाएंगे. सो फॉर दैट वी ऑलवेज नीड टू स्टडी दीज फैक्ट्स. What kind of weather is that particular place having? What kind of climate that particular place is having? Okay. So next, what is given over here is, when the sky is cloudy, your parents insist you to carry an umbrella. Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family function? Yes,
isn't it? कि बारिश नहीं होनी चाहिए अगर किसी का बर्थडे पार्टी है या किसी को पार्टी अगर करनी है कहीं पर किसी एरिया में, सो वी ऑलवेज फाइंड कि कौन कौन सी चीज़ें देखना पड़ेगा कि ऐसा अच्छा क्लाइमेट नहीं, अच्छा वेदर नहीं, वी कैन नॉट प्लान अ पार्टी फॉर दैट इन दैट पर्टिकुलर वेदर. ठीक है, सो वी शुड हैव अ गुड टाइप ऑफ वेदर so that our party functions or any kind of functions could be performed easily and they could be free from those rain showers. Okay, now you must have also heard the expert discussing the weather before the start of the game. Have you ever wondered why the weather may have profound effect on the game? Yes. ठीक है, आपने क्रिकेट मैच अगर देखा होगा तो क्रिकेट मैच में जब भी हम इफ वी सी दैट, इफ वी वॉच आवर टेलीविजन, वी कैन सी दैट समटाइम्स द रेन also happens on those grounds where the cricketers are playing, and then what happens, the field gets wet sorry the field gets wet, and then what happens, the play which is the cricket which is going on over there in that ground, it stops, it gets postponed or sometimes it gets cancelled. तो अभी वेदर का इफेक्ट हर जगह हमें देखने को मिलता है, whether it is the functions, whether it is the place where we have to go for the traveling place, कोई भी टूरिस्ट प्लेस हो सकता है, कोई हिल स्टेशन पे जाना हो सकता है, कोई गेम हो सकता है जहां पर ये बारिश हो जाता है, या कोई भी हम वेदर की बात करते हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में हमको बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी होती है जिसकी वजह से हम उस वेदर से बच सकें, अपने आप को बचा के रख सकें. ओके, सी nowadays cold weather has arrived, cold season has arrived, winter season has arrived, so everybody is wearing sweaters, shawls, mufflers. Okay, so we are wearing socks, और ऐसे करके हम लोग अपने आप को, बॉडी को वार्म रखने की कोशिश करते हैं विंटर्स में और कूल रखने की कोशिश करते हैं समर्स में. सो अकॉर्डिंगली हमारा लाइफस्टाइल भी बदल जाता है, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू द वेदर and the climate which is persisting in that area. So if I say about a hill station, you always think of having the winter's clothes with you when you are packing your bag. Similarly, if I talk about any place where always a dry climate is there, hot climate is there, you will never think of carrying a sweater over there. So climate influences our lifestyle, climate influences the food that we eat, the clothes that we wear, the way by which we live. The weather may have a profound effect on our lives. Many of our daily activities are planned based upon the weather predicted for the day. There are daily reports of the weather on the television and radio and the newspapers. But do you know what this weather really is? In this chapter, we will study about the weather and climate. We will also see how different forms of lives are adapted to the climate in that particular habitat. Now a new word is there, this is the habitat. ठीक है, अभी उसके बारे में हम लोग जब एडाप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां भी मैं एक बार बता दूंगी. सो हियर व्हाट इज इट, it says that when we have different life forms adapted to a particular habitat. Adapt करना एक habitat में, habitat का मतलब the place of dwelling of that particular animal. अगर हम यहाँ बात करें हैबिटेट की, तो ह्यूमन बींग्स का भी हैबिटेट है, हमारा भी हैबिटेट है. हम घर में रहते हैं, स्कूल में पढ़ने आते हैं, मार्केट जाते हैं, एक एरिया फिक्स्ड है हमारा. ऐसा नहीं कि हम आज मार्केटिंग यहाँ कर रहे हैं और अगले दिन नेक्स्ट आउट ऑफ स्टेशन जाके मार्केटिंग करेंगे. इट्स नॉट दैट. सब्जी खरीदने कोई नेक्स्ट रेलवे स्टेशन, आई मीन सब्जी खरीदने के लिए कोई दूसरे स्टेशन क्रॉस करके आउट ऑफ स्टेशन नहीं जाएगा, है ना. So this is what I wanted to say. Habitat means it is a place where the animals are living, where the people are living, and they are performing their daily activities. Okay, so this is what is about the chapter starting. Now I will come up to the first topic, that is weather. That is about the weather. What do you understand by this term weather? In figure 7.1, a sample of weather report from a newspaper is given.
we find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during past 24 hours. ठीक है, past 24 hours से हमें ये weather देखना है. It predicts the weather of a day. Humidity, as you might know that it is a measure of moisture of the air, moisture in the air. You can cut, I have given you this activity as well in the last class also. You have to write down, not in the last class, I mean when the video was there, I have given you an activity for cutting the weather report of 1 week, and then you have to paste it in your copy. You have to cut out the weather reports of the last week from any newspaper. If you do not get the newspaper at home, you can borrow it from your neighborhood. But now please don't go and borrow the newspaper from your family, from the different places, like from your neighborhood or from your friends or from your other people, those who are living nearby, because you know that it is not very safe nowadays to use the things which is being provided by the others. So please don't go and borrow the newspapers. I think everybody is having the newspaper at their homes. If it is not, you can search it online and you can write down the weather reports. Even you can listen to the news which is being daily forecasted, and उसके बाद आप वहाँ से ढूंढ करके आप वो सुन करके लिख सकते हैं. I will not tell you to find out online because already you are doing so many things online these days. So please watch the news and find out the weather of your city. If it is given, it is well and good. Otherwise, you can choose one city and you can write down the daily weather report of that particular city in your copy at least for 1 week. Okay, so that would be again an activity for you, all. And with this weather report will also give us some information कि कौन से जगह में कैसा weather है, कौन से जगह में कैसे सीजन्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमें प्री प्लान करनी होती है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में जाने के लिए. ओके, अब एक वेदर रिपोर्ट आपके बुक में भी दी हुई है. यू कैन सी दैट, छोटा सा कटिंग दिया हुआ है. यू कैन सी दैट पर्टिकुलर फिगर, दैट इज 7.1, अ सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर. आई वंडर हु प्रिपेयर्स दिस रिपोर्ट. दिस बूजो सेज, आई वंडर हु प्रिपेयर्स दिस वेदर रिपोर्ट. कौन प्रिपेयर करता है इसको? Who prepares this? Even I am not preparing, you are not preparing. The people are specialized people, those who have to prepare these weather reports. And from where are these informations coming? So this is being allotted to a department that is known as meteorological department. It is being prepared. So weather का मतलब है कहाँ से ये वेदर, हम यहाँ पर सीधे सीधे वेदर रिपोर्ट की बात करते हैं. दिस इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. meteorological department. Okay, so this is about, it is the meteorological department of the government. This department collects the data on temperature. क्या क्या चीजें चाहिए? temperature, data on temperature, wind velocity रहती है, maximum minimum temperature रहता है, sunrise, sunset. Okay, so many things are given. Sunrise, sunset, temperature that is minimum, maximum temperature, moonrise, sunrise. Okay, ये सारी चीजें उसमें दी रहती हैं. And even ये कोई श्योर चीज नहीं है. This changes. This is only a forecast. ठीक है, आगे आने वाला एक फ्यूचर में बताने के लिए, एक फ्यूचर में होने वाली चीजों के बारे में ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है. दिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन. Okay, so this is just a weather prediction. It is just the weather prediction. अब ये weather prediction है तो इसका मतलब क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ forecast है जहां पर हम जानते हैं कि कौन सा ऐसा जगह है जहां
पर ये सारे वेदर एलिमेंट्स को हमें देखना है. सो एक्टिविटी 7.1, वी कैन कट आउट, cut out the cuttings of the newspaper, even you can listen to the television and write down the particular weather report, how that is being written. You can take a screenshot as quickly because आप उतनी जल्दी लिख नहीं पाएंगे. You can find another way how to write it. Okay. So next is you can paste all the cutouts on a white sheet of paper, on a chart paper पे भी paste कर सकते हो, अपनी copy पे भी paste कर सकते हो. So don't go out to buy a chart paper. You can paste it in your notebook. Okay, you can paste it in your revision copy now. Now record the information. You can even write it down the information. Don't just cut and paste. You can write down the information so you will understand how to write it even. So now record the information from the weather report collected by you in table number 7.1. First row is just a sample from fill the other columns of the data in the chart which will be prepared by you. ठीक है, ये पूरा चार्ट दिया हुआ है, क्या क्या चीजें हैं इसमें. डेट है, अभी मैं इस चार्ट को यहाँ पर बना देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए क्या करना है, वेदर रिपोर्ट कैसे बनानी है. You can write down the date, weather report of a week. You can write down the date, then maximum temperature, minimum temperature, minimum humidity, maximum humidity, and rainfall. This is in percent, this is in percent, this is in degree Celsius, this is in degree Celsius. You have to write down the date just for 1 week. Okay, so you have to take all the information regarding the maximum temperature, minimum temperature, maximum humidity, minimum humidity and about the rainfall. उसको आपको ऐसे पॉइंट्स में लिखना होगा डेट वाइज फॉर 1 week of a particular city, not only your city Varanasi. You can write down any of the city. अगर आपका यहाँ का नहीं दे रहा होगा न्यूज में तो आप कहीं का भी सिटी ले सकते हैं, but don't change the place. Daily you have to write down the same report. ओके, रेनफॉल, अगर आप इस समय, वैसे रेनफॉल का समय नहीं है तो रेनफॉल नहीं वॉच कर सकते हो, तो छोड़ देना उसे, बिकॉज दिस इज नॉट अ रेनी सीजन. अगर रेनफॉल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं. ओके, सो दैट इज ओके. देन रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, अब यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, air pressure. Okay, so many are there. So these names which I am taking, which helps in preparing the weather report or any weather, is based upon these words or these facts, and they are known as weather elements or the elements of weather. This is known as weather elements. So weather elements are those which will give us the information of any place, the weather of any place. Okay, now do all 7 days have the same maximum and minimum temperatures, humidity and rainfall? The maximum and minimum temperature recorded may be same for some days, may be different for other days, may be same for another. The day-to-day conditions of atmosphere at a place with respect to the temperature, change in temperature, humidity, rainfall, wind speed is known as weather of that particular place. ठीक है, weather day-to-day change है. Weather means it is a day-to-day change. It is a day-to-day change in the weather element. It is a day-to-day change in the weather element. अब ये weather element क्या है? Weather element, for example, this is the temperature,
pressure, rainfall, wind speed, एक्सेट्रा. और भी बहुत सारे इसमें आ सकते हैं. टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, ये होना ही है. सो इनको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी. इवन ह्यूमिडिटी ऑल्सो. So these are known as weather elements. Okay, so weather elements means these are the terms, these are the ways by which you can describe any weather of a place in a well-mannered way. Okay. Now, the temperature and humidity of other factors are known as the elements of weather. और अच्छा, अभी हम यहाँ पर दोबारा समझते हैं कि वेदर को हम डे टू डे चेंजेस क्यों कह रहे हैं. जैसे आप अभी देख लो, अभी सुबह के समय में बहुत सारी धूप निकली थी यहाँ पर, बट इस समय यू कैन सी द क्लाउडी कंडीशंस आते हैं. कोल्ड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. सुबह इतना कोल्ड नहीं था, अभी और ज्यादा कोल्ड होने लगा इस समय. फॉग हो रहा है, ठीक है. नाइट टाइम का टेम्परेचर बहुत लो हो जा रहा है, मॉर्निंग का टेम्परेचर लो हो जा रहा है, बट इन द इवनिंग एंड इन द नून टाइम द टेम्परेचर इज ऑप्टिमम. दैट इज ओके. सो दीज आर द फैक्ट्स, दीज आर द चेंजेस इन द वेदर एलिमेंट. दिन भर ये चेंजेस होते हैं. अगर एक कुछ घंटों की हम बात करें, टेम्परेचर का इंक्रीज होना, कम होना, ज्यादा होना, एक सनराइज किस समय होगा, मूनराइज किस समय होगा, टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितना है, ऑल दीज एलिमेंट्स आर चेंजिंग. These elements are changing to tell us that a particular weather is happening, and if that particular weather persists for a long time, कैसे हम पहचान रहे हैं कि हमारा ये कोल्ड वेदर चल रहा है, कोल्ड सीजन चल रहा है, विंटर सीजन चल रहा है? हम हाउ कैन वी नो दैट? वी कैन सिंपली से बाय सीइंग द वेदर रिपोर्ट ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस इन द पर्टिकुलर मंथ. बहुत दिनों तक सेम वेदर चल रहा है तो उसका मतलब इस पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट कैसा है? सेम जैसा वेदर चल रहा है. ओके. जैसे अगर मानते हैं हम, कैसे, हाउ कैन वी से दैट इन दिसंबर, इन नवंबर देयर इज ऑलवेज अ कोल्ड सीजन, देयर इज ऑलवेज अ विंटर सीजन. व्हाई नॉट दैट समर सीजन्स आर हियर इन दिस टाइम एंड विंटर माइट गो इन मई और जून? इट्स नॉट दैट. कैसे हमने डिसाइड कर लिया? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर elements of the weather which is persisting in that particular duration of time, in that particular duration of month. Okay, so this is known as the weather. Okay, fine. The temperature, humidity and other factors are known as the elements of weather. अभी आपको I think समझ आ जाएगा. Then the weather of a place changes day after day, week after week. That is why we often say that today's weather is too humid, weather was warm last week, or it is very cold this week. The weather is such a complex phenomenon that it can vary over very short period of time. Yes, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग का टेम्परेचर बहुत लो था, दोपहर का टेम्परेचर इस समय थोड़ा सा अभी 12 o'clock या 1 o'clock तक ठीक था, बट नाउ फिर से दोबारा आप देखेंगे बाहर तो क्लाउडीनेस है. आप फ्रीक्वेंट चेंजेस देख रहे हैं यहाँ पर. तो वेदर एलिमेंट्स आर कंटिन्यूसली चेंजिंग. दैट इज व्हाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड द क्लाइमेट इज दिस ओनली, दैट वेदर इज डे टू डे चेंज, इट इज आवर टू आवर चेंज इन द वेदर एलिमेंट्स, whereas it is day to day change in the climatic condition of a particular day. ठीक है. तो उसमें क्लाइमेट में एक लॉन्ग टर्म का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं. और अगर हम देखें यहाँ पर वेदर की बात करते हैं तो वेदर इज अ डे टू डे चेंज इन द वेदर एलिमेंट्स. दैट इज व्हाई इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन. It happens sometimes that it is sunny in the morning, but suddenly cloud appears from nowhere and nowhere, and it starts raining. Yes, sometime it happens. अभी तो धूप खिली थी, थोड़ी देर के बाद देखो बहुत सारा बारिश हो गया और सब तरफ पानी भर जाएगा. ठीक है. क्यों हो जाता है ऐसा? इट्स बिकॉज वेदर एलिमेंट्स आर चेंजिंग डे टू डे, आर टू आर. बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, इसीलिए ये कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं. हम डिसाइड नहीं कर सकते वेदर के बेसिस पर किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट, जब तक कि हम पूरे
कुछ सालों तक उसको स्टडी ना करें. वी हैव टू स्टडी these elements of weather for years. We have to study these elements for years so that we can describe the weather, we can decide the climate of that particular place, and that is ultimately based upon what? It is based upon the weather conditions of that place. ठीक है? Fine. Now the next thing, what is it is you must have heard that several such experiences. Try to recall any of such experience and share it with your friends. Okay, you can share it in your online class. We'll share it, we'll talk in the online class on this topic. Since weather is such a complex phenomenon, it is not easy to predict. हम पहचान नहीं सकते, हम समझ नहीं पाएंगे. अगर आज आप अम्ब्रेला रख के नहीं लेकर आते हैं अपने बैग में, मे बी शायद बारिश हो जाए शाम को, आपके स्कूल से लौटते समय बारिश हो जाए, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं. दैट इज वाई वी प्रिडिक्ट. प्रिडिक्शंस एंड कंफर्मेशन में यही फर्क है. प्रिडिक्शंस में आप सिर्फ कुछ फोरकास्ट कर सकते हो, पहचान सकते, आई मीन आप उसको बस एक चीज कह सकते, मतलब आई मीन यू कैन से दैट दिस इज अबाउट जस्ट द एक्सपीरियंस काइंड ऑफ थिंग. कि हाँ, प्रिडिक्शंस का मतलब है कि हम सिर्फ एक भविष्यवाणी करते हैं, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही. ओके, आई मीन अगर टेम्परेचर आज लो हुआ है तो जरूरी नहीं है कि कल भी उतना ही ठंडा होगा. अगर अभी धूप निकली है, जरूरी नहीं कि नेक्स्ट 1 घंटे के बाद भी सेम टेम्परेचर होगा. Simply predict the weather reports. Okay, so please understand what is weather report. It is always based upon the predictions only. Look at the graph given below, which shows the maximum temperature record of duration of August 2006 to 9 August 2006 at Shillong, that is Meghalaya. ठीक है, एक रिपोर्ट यहाँ दी हुई है, एक ग्राफ दिया हुआ, you can see it from your book as it is given here in page number 70, figure number 7.2. Graph shows the maximum and minimum temperature from 3rd August to 9th of August 2006. As it is clear from any weather report, the maximum and minimum temperatures are recorded every day. Yes. ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर हमेशा हमें एक दिन का मिल जाता है. As we have already studied in chapter number 4, as I told you, there is a special thermometers for this purpose. अब कैसे हम मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को कैसे देखेंगे, यहाँ पर we'll see that how to measure the maximum and minimum temperatures. मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर कैसे हम यहां पर देखेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर को. वी यूज स्पेशल thermometers that is known as maximum and minimum thermometer. Maximum and minimum thermometers. ठीक है, maximum and minimum thermometers can you guess when during the day we have maximum temperature and minimum temperature? बहुत आसान है. मैक्सिमम टेम्परेचर हमेशा आफ्टरनून में होता है और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? बिल्कुल मॉर्निंग टाइम है, अर्ली मॉर्निंग 4 AM और एकदम 4:30 और 5 AM. ठीक है, सो अर्ली मॉर्निंग में हमेशा मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा? इट इज ऑलवेज इन द आफ्टरनून. एंड मिनिमम टेम्परेचर कब होगा? अर्ली मॉर्निंग. सो यही दोनों टाइम है जब हम मैक्सिमम टेम्परेचर को पता करेंगे और मिनिमम टेम्परेचर को पता करेंगे. सो इन आफ्टरनून वी विल यूज दिस थर्मोमीटर टू टेल अस द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड इन द अर्ली मॉर्निंग we will use this thermometer, that is maximum and minimum thermometer, to understand, to take the reading of the minimum temperature of that particular day. Okay,
So maximum temperature of the day generally occurs at afternoon while minimum temperature occurs generally early in the morning. Can you now understand why in summers we feel so miserable in afternoon and comparatively very much comfortable in the morning? In summers, but it is just opposite in winters. सुबह में सबको ठंडी लगती है और दोपहर में सबको अच्छा लगता है winters में. What about the times of sunrise and sunset? We know that in winters it becomes dark very early to get and you do not get much time to play. Yes, are these days shorter than winters? Try to find out yourself and completing the project at the end given at the end of this chapter. Okay, children? So with this we have studied how to calculate the maximum and minimum temperature using the thermometers. When we will use this thermometer for calculating the maximum temperature during afternoon and minimum temperature in the early morning, and this is how we can make the weather report, and we will understand some more things about this maximum and minimum thermometer in the next class. So today we have studied this chapter, we have started this chapter, and I have given you some concept of the weather and weather report, how to measure the weather elements. One of the weather element, that is the minimum and maximum temperature, we have seen. Okay, I'll be discussing more things in the next class. Till then you can watch the videos which are already there and you can ask your doubts in your online class. So that's all for today.